Yeah, hi sir, good evening. Hello, sir. Good evening. Hi. Hi, good evening, everyone. So let's just wait for 2 or 3 minutes, then we will start. Yeah, sure. Okay, so we can start. As I can see, number of people have joined the meeting. Okay, so guys, my name is Sahitya, and many of you knows about me, right? We have already discussed about. We have already covered MCSA previous batch, right? And whosoever are new in the batch, right? So for them, let me introduce myself. My name is Sahitya, and I am working as a cloud operations engineer in a big MNC. And I am a certified Azure 104 certified, MCSA certified, and CCNA certified, right? And I am teaching in networking since two years. And today we are going to start our. So today is going to be the demo session of our Azure batch, right? Where we are going to discuss about first of all what actually cloud computing is, right? And after that, we are going to I will explain you about how to create your account on Azure, or how to use the Azure services, or later on whatever the topics are required to get the Azure 104 certification. So we are going to cover that, right? And this is going to be the blended batch, means it will be in Hindi as well as in English, right? So why Azure? Why Azure 104, right? So first of all, Azure हमें करना क्यों है? Because see, previously we worked on the servers, right? We already knows about servers, that how to make the domain controllers, how to make the group policies, or how to set up different type of features in your servers. So that we are doing on-prem data center, है ना? पहले हम क्या कर रहे थे अपने खुद के डेटा सेंटर पे, या फिर हम अपने VMware पे भी used to create our VMs, and we used to set up our infrastructure onto the on-prem environment only. But now अब आगे cloud का future है, right? So we have to cover cloud also, because हमारे concepts clear and that how to work on servers, है ना? So now to make our infrastructure on cloud, or to migrate our on-prem data centers to cloud, so that we are going to cover in this batch. ठीक है? और this is the necessity also. So we should aware of cloud, because see, आज या कल आपको cloud पे move, आपकी company cloud पे move जरूर करेगी, and you should aware of the cloud services. Either you can go for AWS, or you can go for Azure, or you can go for Google Cloud also, GCP, right? So who should opt for AWS? जिसको लिनक्स का अच्छा नॉलेज है, so they can go for AWS, right? Or who are already aware of servers, Microsoft servers, so they can opt the Azure cloud. ठीक है? AWS Amazon का प्रोडक्ट है, and then Azure Microsoft का प्रोडक्ट है, and then Google Cloud is the product of Google itself. Hello, Sahit. My Yeah. name is Devanshu. I have a Hi doubt. Devansh. I means I Mhm, have I have heard from many people that mhm. if you want to go
if you are interested in Linux, then go for AWS. If you're interested in Exactly. Windows, so means how does it means? Can you elaborate that? Like, if a person is not interested in Linux, then he or she cannot learn AWS or something else. No, you should have the basic concepts of Linux. I'm not saying you should have very pro on Linux, right? But you should have the basic understanding of Linux. You should have the basic understanding of the commands that are being used in the Linux operating system. So I'm not saying you should have the pro knowledge, but you should have the basic knowledge of a Yeah. So Linux like, in that why do we case. say means why do we say like this? Because the basic things of the cloud would be the same. Hmm. But then too, why we are saying this that Linux is more important if you means Linux is important if you go for Azure, as you have already said just before. So means what is the logic behind this? See, AWS is totally based on Linux, right? So if you want to connect any of your virtual machine, right? So first of all, you have to create the Bastion host, right? And that Bastion host can be created on Linux operating system only, right? तो जब तक आपको वो पता ही नहीं होगा, आपको वो Bastion connect कैसे करना है, जब तक आपको वो पता ही नहीं होगा, so how you will be able to manage your infrastructure? तो उसमें मतलब in that like we cannot connect the two VMs or something with the help of UI. यस, सो टू वे देखो, सिक्योरिटी जब हम अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ, अगर आप अपना लैब सेटअप कर रहे हो इन योर, या आप अपने लर्निंग के लिए लैब सेटअप कर रहे हो, इन दैट केस इट इज ओके, राइट? बट अगर अपने ऑफिस के लिए सेटअप करते हो, सो इट शुड बी सिक्योर्ड, द कनेक्शन शुड बी सिक्योर्ड, right? So in Okay. that case we should set up a bastion host that basically secures our end-to-end connection, so Okay. that no one will be able to track our activity, that what actually we are doing on internet, or in whatever we are doing on the infra, no one will be able to track your activities, Okay. right? And what and like in Azure, it is not connected with the via with Linux. It is actually, but majorly on Microsoft. See, AWS और Azure का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि आपको कोई भी सर्विस चाहिए, AWS उसको डेवलप करके दे देता है, right? But in case of Azure, there are some limitations. There are some limitations with Microsoft, that only the particular services that are introduced by the Microsoft only can be opted by the tenant. ठीक है? Okay. तो वहां पर अगर आपको Azure से भी कनेक्ट करना है, so you can use VMs also, you can use Linux VMs also. But traditionally, why Microsoft, अब ये Microsoft का product इसीलिए है, because see, you will be through this product you can use the graphical user interface also. Both the options you will get in this case. But in case of Linux, but in case of AWS, you can do it on Linux only, Okay. right? All right. Fine. Okay. Okay. Thanks. Yeah. So first of all, we should be aware of cloud computing fundamentals, that what actually cloud computing is, we have to learn about, right? So today we are not going to perform any kind of practical, right? So first of all, we will create our base, right? After that only we are going to create our accounts, and we are going to perform some practicals or perform some labs on the Azure portal itself. Okay. So what actually cloud computing is? So first of all, what is going to be the agenda of today's session? So we are going to learn about cloud computing, why cloud computing is needed, what are the types of cloud computing, cloud providers, life cycle of cloud computing solution, and then cloud computing with Azure. Okay. So guys, wherever you have any query, you can just unmute yourself and you can ask straight away. Okay. Now, what is cloud computing? So cloud computing, it is a delivery of computing services over the internet, which is otherwise known as the cloud, right? These services include servers, storage, databases, networking, software, analytics, and intelligence. So cloud computing offers faster innovation, flexible resources, and economies of scale. So traditionally हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने डेटा सेंटर अपने ऑफिस में बनाते हैं, हमें अपना डोमेन कंट्रोलर बनाना है, देन फाइल सर्वर्स बनाने हैं, राइट? हमारा वेब सर्वर सेटअप करना है, वेब एप्लीकेशन हमें अब होस्ट करनी है. सो एवरीथिंग वी यूज टू अर्लियर, वी यूज टू डू इट ऑन आवर
on-prem data center, right? But with the help of cloud computing, you can do all these things on cloud. अब क्लाउड का मतलब ये नहीं कि बादलों में बैठ के कहीं करना है हमें, राइट? सो क्लाउड भी एक तरह का कहीं डेटा सेंटर बना हुआ है, where actually there are number of servers present over there. So वहां भी physical servers लगे हुए हैं, right? So onto that physical servers, you will be able to host your website, you will be able to use your services, and you will be able to use your file server. So multiple things you can use under the cloud services. ठीक है? सो आइडियली पहले क्या होता था, आप अपने डेटा सेंटर में सेटअप करते थे सारा सर्वर, एंड देन अब क्या है, अब थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग, सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू इट ऑन द क्लाउड. तो क्लाउड पे आप चाहे किसी पे कर लो, AWS पे कर सकते हो, Azure पे कर सकते हो, या फिर गूगल क्लाउड पे कर सकते हो, राइट? और इवन आप उसको स्केल भी कर सकते हो, लाइक इलास्टिसिटी इज देयर. मींस लेट्स सपोज आप अपने सर्वर पे हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो 200 GB की, राइट? एट द पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ, वो 200 GB हार्ड डिस्क कंप्लीट हो गई, लाइक फुल हो गई. सो इन दैट केस अगर आप हार्डवेयर यूज कर रहे हो, मींस अगर आप ऑन प्रीम यूज कर रहे हो, सो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, हार्डवेयर बाय करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी हार्ड डिस्क को, सो दैट यू विल बी एबल टू यूज इट. बट अगर मैं यही क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करता हूँ, इन दैट केस within a number of, like within a couple of seconds, I will be able to increase my hard disk size. So what actually is there is scalability. You will be able to scale your infra according to your need. जैसे लोड बैलेंसर्स होते हैं, राइट? इन केस ऑफ लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं कि लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है, राइट? एंड योर सर्वर इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज ऑफ द क्लाइंट्स. So in that case, you should have the backup thing, or you should have the second server so that it can share the load of that particular website. और वो क्या करेगी, आपकी सेकंड वेबसाइट फिर आपके यूजर्स की क्वेरीज का रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी. Okay, so this scalability we can define as per our need. Now you can take example also. See, let's suppose if I have to manage my file servers. ठीक है, तो ट्रेडिशनली क्या करता था, मैं अपने स्टोरेज डिवाइसेस अपने ऑफिसेज में सेटअप करता था, फाइल सर्वर, पेन ड्राइव एंड ऑल दीज थिंग्स आई यूज्ड टू कॉन्फ़िगर इन माय ऑर्गेनाइजेशन ऑन प्रेम, एंड देन आई यूज्ड टू ट्रांसफर ऑल माय डेटा, राइट? अब इस केस में एक चीज और हो सकती है कि number of users only, like particular users will be able to access your storage devices, or the users that you are defining, only they will be able to use your storage, right? But in case if you are using file servers on cloud, right, in that case you can make जितने भी आपको users को access देना है, according to that you can give the access of your file servers, and they can use your file servers, and they can store their data. बस उनको क्या चाहिए, सिर्फ इंटरनेट चाहिए, राइट? इनके इस केस में क्या होगा, सबसे पहले अगर आप लेट्स सपोज यू आर आप इसको एक्सेस कर रहे हो अपने डेटा सेंटर को, आप घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, in that case you have, first of all you have to connect the VPN, and after that only you will be able to enter in your office infrastructure, right? But यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट चाहिए, और you should have the access of that particular file server, and you will be able to use it, right? So rather than managing files on local storage devices, cloud computing makes it possible to save them over internet. So you should have the access of internet, and then you will be able to use your file servers, right? Now, types of cloud computing. So we do have two types of cloud computing, that is deployment model, and second one is service model.
right? Deployment model and service model. Under deployment model, it comes public cloud, hybrid cloud, and then private cloud. And in case of service model, it comes like IaaS, PaaS, SaaS, right? We'll discuss it one by one. So first of all, we'll discuss deployment model. So you can take an example, right? ये एक बस है, कार है, and then there is a taxi. तो बस को आप क्या एग्जांपल ले सकते हो? दैट इज इट इज अ पब्लिक क्लाउड. मींस इस बस को कोई भी एक्सेस कर सकता है. लेट्स सपोज ये बस दिल्ली जा रही है, राइट? सो इसमें कोई भी आके ट्रैवल कर सकता है. एवरीवन विल बी एबल टू ट्रैवल ऑन इनटू दिस बस, राइट? सो दैट इज कॉल्ड पब्लिक क्लाउड. मतलब इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, राइट? एंड देन प्राइवेट क्लाउड, यू कैन रिलेट इट लाइक ओन कार. मतलब आपकी खुद की एक कार है, only you have the access of that car, only you can drive that car. Other than that, अगर आप जब तक किसी को अपनी कार की चाबी नहीं दोगे, no one will be able to drive your car, no one will be able to enter into your car. Same private cloud है, only the organization have access to this private cloud only, right? And then hybrid cloud. So hybrid cloud is the combination of both private and public. Means अगर आप टैक्सी किसी को हायर करते हो तो वो आपकी प्राइवेट भी है, right? And it is a public transport. After that, other will also be able to hire this taxi, right? So what is public cloud again? Public cloud provides a shared platform that is accessible to the general public through an internet connection, right? And public cloud operated on the pay as per use model. Means whatever the services you are using, only for that you have to pay to the vendor. Means देखो अभी है बस का एग्जांपल ले लो. जैसे लेट्स सपोज ये बस दिल्ली जा रही है, राइट? तो मुझे जरूरी थोड़ा ना कि मुझे दिल्ली तक का ही इसका किराया देना पड़ेगा. मैं रास्ते में कहीं भी उतर सकता हूँ, और जहां पे मुझे रास्ते में उतरना है मैं उतना ही टिकट पे करूंगा. लेट्स सपोज मुझे रास्ते में करनाल उतरना है, राइट? तो मैं करनाल तक का ही किराया दूंगा. वाई टू पे टिल दिल्ली? तो सेम यहाँ पर है, जितने सर्विसेज आप यूज करोगे, ओनली फॉर दैट सर्विस ओनली यू हैव टू पे टू द वेंडर. एंड वेंडर कैन बी अगेन AWS, Azure and Google. ठीक है? So the cloud infrastructure is made available to the general public over the internet and is owned by the cloud provider. And that cloud provider can be AWS, Azure, and multiple clouds like Alibaba and all, IBM. Yes, Raj, you can unmute yourself. सर ये जो पीडीएफ है ये हमें अवेलेबल हो जाएगी ना? Yeah, everything will get it. सर ये Okay. नेक्स्ट डे होगा, मतलब अभी नोट्स बनाने का भी जरूरत है नहीं? या अभी तो कोई जरूरत नहीं है, ये यू विल गेट दिस, राइट? बट अगेन अपने आप से आप कुछ बनाना चाहते हो, यू विल गेट द पीडीएफ्स आल्सो, पीडीएफ बुक फॉर 104 एंड आपके 900 के लिए. सो आई विल प्रोवाइड ऑल द बुक्स टू यू, राइट? तो आप अकॉर्डिंग टू दैट उसमें से फिर अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते ओके सर. और सर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाओगे आप? हो. उसके लिए बाद में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कवर द टॉपिक. ठीक है? ओके. ओके, सो दिस इज पब्लिक क्लाउड, राइट? एंड देन प्राइवेट क्लाउड. Private cloud is a model of cloud computing where the infrastructure is dedicated to a single organization only. ठीक है? तो यहाँ पर किसका एक्सेस होगा? Only and only your organization should have the access of your private cloud. Other than that, until or unless you are not giving the access to any other person, no one will be able to access your cloud services. सो ये जो प्राइवेट क्लाउड हुआ ये आपका एक तरीके से वी कैन से ऑन प्रेमाइज डेटा सेंटर की तरह ही हुआ, राइट? बट ऑन Yes, क्लाउड. on cloud, exactly. ओके, देयर इज नो डिफरेंस और समथिंग, राइट? Right. ओके, फाइन, या. Now the hybrid. It consists the functionality of both public and private cloud.
राइट। अब इसमें क्या हो सकता है, देखो कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है आपको पब्लिकली शेयर करनी पड़े, लाइक यू कैन से इट एज इंटरनेट और इंट्रानेट, है ना। तो इट में पॉसिबल कि आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी अब हम चलो amazon.com जैसे, हम अपनी कुछ भी सेल्स वहां से शॉपिंग करते हैं amazon.com से, ठीक है। तो amazon.com पे जो भी प्रोडक्ट्स है वो तो हम देख सकते हैं, राइट, जो भी हमें वहां से बाय करना है वी आर एबल टू बाय इट फ्रॉम द वेबसाइट। बट क्या हम amazon.com के जो अंदर जो एम्प्लॉयज बैठे हैं, जो उनके अंदर का कॉन्फ़िगरेशन है सारा नेटवर्क का, तो क्या हम उनके सर्वर्स एक्सेस कर सकते हैं? नो। Or else we can also say like this that Amazon per we can buy and we can think, but we cannot like add or something the things, right? राइट, वी डू नॉट हैव एक्सेस, वो दूसरा पार्ट हो गया। बट आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक, अच्छा इसका बैंकिंग का एग्जांपल ले लो एक, राइट। Yes. इन केस ऑफ बैंकिंग आप वहां पर सब कुछ देख सकते हो, अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो, सब कर सकते हो, बट एक्चुअली जो बैंकिंग का पूरा कॉर्पोरेट है उसका, सो क्या आपको अंदर के कि बैंक में कितने एम्प्लॉयज हैं, कौन कौन बैंक में कहाँ किस लोकेशन पे कौन बैठा है, सो ये चीजें तो हमें एक्सेस नहीं है। सो क्या किया बैंक ने, प्राइवेट इंफॉर्मेशन, अपनी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो अपने पास ही रखी, बाकी उसको जो पब्लिकली, मींस जो भी बैंक्स क्या करते हैं, स्कीम्स इंट्रोड्यूस करते हैं जो पब्लिकली सबको पता होनी चाहिए, राइट, सो दे डिड इट ऑन द पब्लिक क्लाउड। But like Sahit, one question I have हम्म that regarding this, like it usually happens for us that if taking an example of bank, हम्म when they log in, they have a different kind of UI. राइट, But when we log in, we have a totally different डिफरेंट kind डिफरेंट, of UI. एग्जैक्टली So एग्जैक्टली। means, yeah, obviously I understand this, हम्म right? But हम्म like suppose that we can also say that if we are working in a company, the हम्म company website we have a different SharePoint page, and for the एग्जैक्टली outer public, like for a general public, they have a different page. So एग्जैक्टली। like in a real world means how does it implements like a basic idea? I'm not asking to go in that depth Mm-hmm. that So what the are the basic idea is basically you can set up your 50% of infra on public and 50% on private. okay, fine, all right. Okay. Fine. Yeah. And like, what is the example of public cloud? Public cloud can be your Gmail. websites, right? We Gmail can हो say, गया आपका और Yahoo Mail हो गया, right? And अंदर की जो अब इनकी जो companies में share points and all चल रहे हैं, that you can say it as the private cloud because you do not have the access of their share points and all. You yeah, cannot correct. access their HR portals. You cannot access their workday, Yeah, correct, right? correct. Yeah. Yeah, yeah, correct. सर तो आई हैव ये आपका एक क्वेश्चन। हाइब्रिड क्लाउड का एग्जांपल हो गया, right? Exactly, exactly. And if we talk about the public cloud only, Hmm. then like what example we can give? Public cloud like this one, let's suppose you are setting up any of the e-commerce website, then that e-commerce website is publicly available for all the clients, for all the users. That is like that is also the hybrid cloud, no? That for their employees they have a different setup. Yeah, but it is only available for the public only, na? We are talking about here what actually is available for your public. No, like you have said that the Hmm, example of e-commerce site, right? hmm, hmm, So in an e-commerce site, yeah, one kind of experience is provided to the public, hmm. and another kind of experience is saved for their employees. Right. So it is an example of hybrid cloud, I think, हाँ तो if I'm ठीक है wrong. ना, बट मैं एक्सेस तो पब्लिक क्लाउड के दे रहा हूँ ना अपने यूजर्स को। आई एम नॉट गिविंग द एक्सेस फॉर द माय प्राइवेट क्लाउड, आई एम नॉट गिविंग दैट एक्सेस टू द यूजर्स। उनके एक्सेस मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। Yeah, that I understand. हम्म, But like there is nothing totally like public cloud. देयर कैन बी So like any examples do we have? एग्जांपल, यू कैन टेक इट एज योर Like whatever examples we are taking. you can take the examples of websites and all these things, right? Yeah, but but like as far of my understanding, what you Hmm. have.
taught till now, they are means I am connecting with all these things as a part of a hybrid cloud. So Like, hmm. yeah, I hope like you are getting my point. What Yeah, exactly I am yeah, trying I'm to. getting your point, right? Right, I'm getting your point. So public cloud, you can say it is like Azure, AWS, and then your Google Cloud. So these are publicly available. Okay. Sir, if I may speak, I Hmm. think Yeah, yeah, you're please. implying you're implying to say that the infrastructure is built by AWS or Google or Azure. It's not Right. built on premises. It's basically the infra, whatever the server that you build, whatever the switch, the router, no, whatever the thing that you do, it's Exactly. done by the provider. Nothing is Right. done by your side. Exactly, exactly. But what about when you talk about private cloud? So does Microsoft or Azure or AWS built any infra on the company on-prem, or is it like how does it happen? I'm not sure. It 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 can be on-prem, like they will give you the access and they will set up a platform where you will be able to use your on-prem data center on cloud also. Like kind of switch something like Exactly, a exactly, sandbox or something like that, exactly, right? exactly. Yeah, I got you. No, I got you. Yeah. It's more like the infra is built on either on the completely on the provider side or right. just on the the consumer, the customer side. Exactly, If it exactly. both if it both wise, then it's called hybrid, Hybrid, right? exactly. Right. Yeah. So where the control on you have only the like provider has also the control, and even the like your organization has also the control on the cloud. So then it is called as the hybrid, right? And in case of private, only and only the organization has the control, and in case of public, so only the provider has the control on your infra. Hello, Yep. sir. I have confused in one sentence that Hmm. hybrid cloud is a part of the public cloud or public cloud is a part of the hybrid cloud. Which is the correct sentence, please? Can you tell me? So both are the combination. Hybrid is the combination of public and private both. Okay, Okay, It has a equal part, right? exactly. It Yeah. can be, right? Like it can be 80% or 20%. It is not like like it will be equal only. It can be depending upon the The organization requirement. requirement. Exactly. It will be. It will vary. Okay. Now, Gotcha, sir. types of service model we have. See, earlier we talked about deployment model, right? And now we have the service model under cloud computing. So it is IaaS, PaaS, and SaaS, right? So if your business needs a virtual machine, opt for infrastructure as a service, right? And if your company requires a platform where building software products, pick platform as a service. And if your business doesn't want to maintain any IT equipment, then choose software as a service. Now, what IaaS is? See, infrastructure as a service is a cloud service that provides basic computing infrastructure. Services are available on pay for what you use model. ठीक है, आपको वर्चुअल मशीन सेटअप करनी है, आपको अपने सर्वर सेटअप करने हैं, सर्वर बिल्ड करने हैं. So for that you will be needing infrastructure as a service, right? Let's suppose आपको अपने domain DCs build करने हैं. So that can be built through IaaS. First of all, we will be needing infrastructure, right? And IaaS providers include Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud Computing Engine, and it is majorly used by the administrators. Means आपके admin use करेंगे because they have to set up their infra, right? Yes, अब sir. let's suppose आपको कोई application अपनी host करनी है, आपको अपनी application आप खुद होस्ट करना चाहते हो. इन दैट केस आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड करना पड़ेगा ना. आपको एक वेब सर्वर पहले बनाना पड़ेगा. एक पहले आप सर्वर सेटअप करोगे, ठीक है, फिर उसके अंदर वेब सर्विसेज का रोल डालोगे, राइट? एंड देन यू विल बी एबल टू यूज योर
website. Okay, so IS is infrastructure as a service, then PaaS, platform as a service. So PaaS provides cloud platform and runtime environments for developing, testing, and managing application. It allows software developers to deploy application without requiring all the related infrastructure. And basically it is used by the software developers. Platform as a service means, if let's suppose, again you can take the example of any um, वेबसाइट, ठीक है? अब देखो क्या फेज होता है एक वेबसाइट को बिल्ड करते हो, पहले कोडिंग होती है, डेवलपमेंट होती है, राइट? फिर उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद फिर आप डेटाबेस मैनेज करते हो, फिर उसके बाद आप पूरी मॉनिटरिंग उस वेबसाइट पे चलाते हो, दैट हाउ एक्चुअली योर यूजर्स आर हिटिंग योर वेबसाइट्स, और कौन यूजर आपकी वेबसाइट से कितना लाइक खरीद रहा है आपकी वेबसाइट से कुछ भी प्रोडक्ट, राइट? तो इस केस में क्या है, आपको प्लेटफॉर्म एज सर्विस कोई भी एप्लीकेशन रन करनी है, लेट्स सपोज आप कोई भी एप्लीकेशन रन करते हो, उसके लिए आपको एसक्यूएल सर्विस की जरूरत है, जावा रन टाइम की जरूरत है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. So in Azure, do we get the option like which model we have to choose, something like that? Yes, we'll get according to our need, we can customize our need and we can do. So can you give a specific example for platform as a service? So let's suppose if I need to if I need to check my code, that whether this code is running fine or not, right? So in that case, I need no to do anything, I need no to do any third, I need no to do install any kind of third party tool in that case. It's like for the developer, they get all the tools they needed in the Exactly, platform as a whatever they service. need, whatever the languages they need, or everything they will get it under platform as a service. Like the basically developing a code is a software developer job. So in Exactly, the process of developing a code and an application, so they give all the application tools, testing things, exactly. all the stuff. Hmm. Okay. So for developing any of the application, there should be some language needed, right? Either it can be your C++, either it can be your Python. Java, So Python. whatever the languages are needed, so it can be provided by this service. Okay. Now, software as a service. In SaaS, cloud provider host and manage the software application on pay-as-you-go pricing model. All software and hardware are provided and managed by the vendor, so you don't have to maintain anything. You can take the example of Office 365, Gmail, Google, like these are the examples of your software as a service. See, अगर आप Office 365 अपना exchange server setup करते हो, राइट? तो आप क्या माइक्रोसॉफ्ट से बस एक लाइसेंस बाय करते हो, उसके बाद में जो भी इंफ्रा नीडेड है, so that is being managed by the Microsoft itself, है ना? उसके अब उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल तो नहीं है ना, और या फिर आपकी कोई आप बस ऐसा करना चाहते हो, आप बस अपनी एक एप्लीकेशन रन करवाना चाहते हो, दैट्स इट. उसके बाद में सारी आपने टेंशन दे दी क्लाउड प्रोवाइडर को, वेंडर को, that I'm not going to do anything. Whatever the needs will be required to run my application, you are going to take care of all these things. क्या इंफ्रा चाहिए, क्या उसको प्लेटफॉर्म चाहिए, everything will be managed by the vendor. बस मुझे क्या करना है, लॉग इन करना है और अपनी एप्लीकेशन रन करवानी है, दैट्स इट. मैं कोई बॉदरेशन नहीं रखना चाह रहा. And whatever the things I'm going to use under this, I have to pay as per the host. It's like if you want to deploy a SolarWinds monitoring server, so you just need to log in and then do the thing, right? Like you don't need to create a server, install the software, all the stuff. Exactly. So you are not going to do anything in this case. You have just You just pick the application that you want to use. That's it. right. You So do. whatever your requirements are, you have just explained to the vendor. So according to that, he'll going to procure all the infrastructure, and as per the infra, you have to pay to the vendor. That's it.
there would be a billing cycle, and according to that billing cycle, you have to pay to the vendor. How does the actual process go? Like if so, is there a customer relationship person like a tech Yes, engineer or something? exactly. We do have the TAMs for all these things. So they basically communicates with the client, as well as they basically take care for the billing part and all these things. Okay. That is basically technical account managers. So they used to manage all these things. सर मुझे एक ना है कि हाँ ये जी। एंड कस्टमर, एंड यूजर्स, एंड सर्वर पॉइंट, हम्म। इसका मीनिंग होता क्या है एग्जैक्ट? सॉरी। ये एंड से यूज होता है ना, एंड कस्टमर्स, एंड हाँ पॉइंट्स, एंड हाँ जी। सर्वर पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स मींस एंड ये जो यूज होता है अभी देखो, तो एंड कस्टमर्स मीन्स किधर यूज होता है? मैंने क्या किया, अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करवा दिया थ्रू SaaS, राइट। उसके बाद में मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं, मतलब जो मेरे यूजर्स हैं, जो मेरी वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं, सो दे आर द एंड कस्टमर्स। डेस्टिनेशन बोल सकते हैं क्या? डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन तो हाँ बोल सकते हो, डेस्टिनेशन भी, बट बेसिकली एंड कस्टमर्स इज द गुड थिंग यू कैन यूज। ओके। एंड सर आईएएस में हम लोग को एक डेडिकेटेड, अगर मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ तो वो आईएएस का एग्जांपल है, राइट? और आईएएस में मुझे एक डेडिकेटेड एक वर्चुअल मशीन और डेडिकेटेड एक हार्डवेयर अलोकेट होता है, राइट, आईएएस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पैस में सॉरी पैस में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में डेडिकेटेड हार्डवेयर वो प्रोवाइड नहीं करते, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते वो पर्टिकुलर Right. वर्चुअल मशीन के They ऊपर। provides only the platform where you can run your application, or whatever the We don't know. prerequisites to run that application, they basically use to provide that only. In PaaS, we don't know where our application is deployed on each virtual machine, right? हाँ, this thing managed by the vendor only, right? आपको access मिल And जाएगा, बस उस server का access मिल जाएगा, right? और you will be able to run your application over there. in software as a service, the best example is O365. Means only we need to purchase the license, and whatever our requirements we need to share with the providers. Exactly. According to our requirements, they will manage. राइट। अब With, देखो आपने क्या किया, आपने अपना ऑफिस 365 का लाइसेंस लिया, तो आपको पता थोड़ा ना कि ऑफिस 365 कहाँ पर होस्टेड है। डू यू नो? आपको एक्सेस है उसका, बट आप उसमें लॉग इन कर पाते हो, आप अपना आउटलुक यूज कर पाते हो कहीं से भी, बट आपको प्रॉपर जहाँ पे वो होस्टेड है, अब हमें उस चीज का एक्सेस नहीं है, राइट? दैट इज द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। if I compare IaaS, PaaS, and SaaS, the more expensive is the SaaS, right? Because SaaS is provides us more services. सर्विस इज ऑल्सो, बट हियर यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल। आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, आपने अपनी That means बॉदरेशन सारी वेंडर को दे provider दी। That means provider is providing the too much services. I have to pay that much also. एग्जैक्टली। उसमें मुझे पे करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल आईएएस में रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मेरे पास भी ज्यादा रहेगा तो मैं उतना ही पे करूंगा जितना वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल हो बिल्कुल जाएगा बिल्कुल कंसेप्ट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। Okay, so these are the uh, cloud computing types, right? And then there are some cloud providers like AWS, IBM Cloud, Google, Azure, VMware, and DigitalOcean. So these are some cloud providers. So we are going to learn about Microsoft Azure, right? See, one point, like for software as a service, we are giving the example as Office 365 or Google Drive something, right? Can we have the example for platform as a service? So that is the platform, like whatever the prerequisites are required to run my application. Yeah, that I understood the meaning. Hmm. Like any real-time example that yeah, this is like Office 365 is a example of you have said that it is an example of SaaS. Uh, So so the platform as examples are Google Cloud and Azure. These are the platforms where I can create my where actually these are the vendors, they can provide the platform as a service option.
बट ये तो फिर मतलब सभी का एग्जाम्पल हो गया ना, ये जैसे एज़्योर है, इसको अपन एज इन्फो एस की तरह भी यूज कर सकते हैं, पास की तरह भी यूज कर सकते हैं और सेस की तरह भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये तो प्लेटफॉर्म तो यही प्रोवाइड करेगा ना, इसके I अलावा think तो और कोई प्लेटफॉर्म तो हम WordPress क्या is बनाएंगे। या मीन्स आई नो WordPress is मीन्स the best example now for the platform as a service. हाँ Means whichever the applications is available on the marketplace, that can be a example of the platform as a service. हाँ, इसको भी ऐसे ले सकते हो, अब वो भी कहीं पे तो होस्टेड होगा ही, राइट? So at Yes. the same time, you have to understand like this only because these are the vendors, right, which are actually providing you the services. ठीक है, उसके बाद में आप कोई एप्लीकेशन रन हो रही है, वो तो उसके बारे में एप्लीकेशन वो कोई भी हो सकती है, एनी मोबाइल एप्लीकेशन, मार्केट प्लेस, गूगल iOS, आपका जो ये इसका होता है, एप्पल का जो एप्पल स्टोर होता है, सो ये सब द एग्जांपल्स गेटिंग। या बट लाइक आई एम नॉट गेटिंग दैट सेटिस्फैक्शन, Sir, लाइक may I give an example? यस प्लीज। Yeah, so who am I talking to? Devanshu? या या दिवांशु देसाई, या Yeah, या Devanshu. प्लीज Let's say if you want to build a software, just like let's say you want to build an e-commerce site, okay? So what do you need in order to build a website? I mean, like build a website. What do you need? So you need इन a development team to build the code, right? yep, And then test yes, it and then deploy it. So from the start where you actually have a plan to build the website, and then till deployment, all the things that you need in between, like developing, testing, all the stuff, whatever that you require, the tools, that's what the platform as a service comes with. yeah, yeah, but like so we can consider WordPress as an example of PaaS. I'm not sure about WordPress, but let's say you want to test the code, you need Selenium, right? I Mm-hmm. guess you need Selenium. या So एग्जैक्टली, you get Selenium by these any of these providers like Amazon or Microsoft or Google. एग्जैक्टly। But Yeah, but if you exactly. do it in like on premises, let's say, so you You need have to set up to your own, right? You have you to have to set install up your your own own. application, put it, and Exactly. then test it. And then if you want to develop the code, you need Python or C++, the platform, whatever that you need, right? Right. The IDE, whatever. You have to prepare the platform first of all. You have to you have to install the Python and all the prerequisites for the Python and all, right? But here, nothing need to do. You'll get everything installed itself. Yeah. You need not to do anything. So like okay, like if we are talking on the real world, suppose that like you are saying that it provide the tool for the developers, right? Exactly. Yeah. So suppose that if I'm a Java or a Python developer, Hmm. so if I'm a Java developer, I would be writing the code on the Eclipse, Hmm. right? Yeah, So Right. like the cloud will provide the Eclipse to me. Exactly. that's right. Okay, so that we can download it as well. No, means we can. So you have to get license also. You have to get a license also, but that the company will provide to us. Suppose that Then if that I comes only under on So premises. you can Then do that comes under. then you can do all these things on prem. Why you are opting then cloud? अगर आपको सब अपने अपने आप ही मैनेज करना है, right? So you can work on prem then. no, like suppose that we are downloading the Eclipse, right? Hmm. And we have the license for it. Hmm. तो यहाँ पर ये ऑन प्रेम कहाँ से मतलब पिक्चर में आ रहा है? ऑन प्रेम इसलिए पिक्चर में आ रहा है क्योंकि अगर आप Let me यही say सब something. करना चाह रहे हो तो आप अपने डेटा सेंटर में सब सेटअप कर सकते हो, ये सब चीजें इंस्टॉल करना है, लाइसेंस लेना है, तो आप क्यों पे क्लाउड पे जा रहे हो? फिर आप अपने प्लेट यहीं पे सेटअप करो। मैं बोल रहा हूँ आपको सब कुछ कराया मिल रहा है, यू नीड नो टू डू एनीथिंग। अगर आप अगर आप खुद से करते हो, ठीक है, आप लेट्स सपोज आप एक सेटअप करते हो क्लाउड पे, तो उसके लिए आपको एक एडमिन भी चाहिए जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करे। बट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कोई भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, वेंडर काम करेगा इसके लिए आपके लिए। या कुछ ओके सर्विसेज या इंस्टॉल अनइंस्टॉल हो जाती हैं, तो आप आपको लेट्स सपोज यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट सर्विस, आप अपने एडमिन को बुलाओगे, करेक्ट राइट? बट यहाँ मैं बोल रहा हूँ एडमिन की जरूरत ही नहीं है, ओनली द वेंडर विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। yeah, so like yeah, I understood all these things, but like in real time how it will be implemented, suppose that if I have chosen platform as a service, so that
the Eclipse will be downloaded in my local machine, or like I will be logging into the Azure and there I will found the Eclipse in any of the VM and then Right. I First can. of all, you will decide your requirements, right? You will provide that requirement at the time of creation of your resources. You will provide the requirements, and according to that requirement, you will get the infrastructure. So that is like a infrastructure as a service if we are Man, talking it's of. यार, it's hardware you can say it as यार. कुछ आपको कुछ रन करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना वहाँ पे. Yeah. तो वो आप उसको इंफ्रा को मैं अलग तरीके से उसको बोल रहा हूँ. यू आर गेटिंग कंफ्यूज इन दैट पार्ट. ठीक है. तो आपने जो एप्लीकेशन रन करोगे वो भी कोई इंफ्रा तो होगा, वो भी कुछ ना कुछ होगा वहां पे. कोई ना कोई सर्विस, कोई ना कोई वर्चुअल मशीन तो रन हो रही होगी जिसके ऊपर Yeah. आपका इक्लिप्स इंस्टॉल्ड है. सो दैट इज इंफ्रा मैन, राइट? Okay. Yeah, सर yeah. एक Okay. मिनट, 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं. हाँ, प्लीज हेलो. प्लीज प्लीज प्लीज. हाँ. जितना अभी आपने एक्सप्लेन किया हम्म, अबाउट द आईएएस एंड टेस्ट हम्म, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, हम्म, अगर सपोज मुझे कोई जावा का एक कोई एप्लीकेशन बनाना है, कोई हम्म, जावा कोड रन करना है, हाँ, अगर मैं आईएएस यूज कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा सर्विस मतलब ज्यादा पैसा पे नहीं करना है, मुझे मैन्युअली सब करना है, हाँ, ठीक है, मैं हाँ, आईएएस पे जाऊंगा. ठीक है, बिल्कुल आईएएस पे करोगे. जाकर मैं क्या करूंगा, वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा. वर्चुअल राइट. मशीन क्रिएट करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट होगी. सॉफ्टवेयर है, जावा एग्जैक्टली, के वो आप जितने भी इंस्टॉल रिक्वायर्ड करोगे. सॉफ्टवेयर वो मैं मैन्युअली इंस्टॉल करूंगा. बिल्कुल ओके. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बट मुझे अगर ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है, हाँ. मुझे रेडी पोजीशन में सब कुछ चाहिए, तो इन राइट. दिस केस आई विल यूज द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. मतलब वो ऑलरेडी उन्होंने बना के रखा होगा बना के रखा वर्चुअल हुआ है, मशीन आपको में. बस रन करना मुझे है, वहां सिर्फ पे जाके उसका, टेस्टिंग करना है, डिप्लॉय हाँ, करना है. तो मुझे, हाँ, डिप्लॉय O- करना है. तो यही Okay. डिफरेंस है ना प्लेटफॉर्म एंड आईएस. राइट, राइट. So like ओके. okay, so means just the last thing, Sahid. या. Like I know that you are quite नो irritated नो or नो something. नो 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 प्लीज. No, no, like I understand. Like sometimes I am mixing up the concepts. So या. like if I understand the things correctly, please correct me if I'm wrong. If या. I'm choosing platform as a service, then the Hmm. cloud will provide me the VM with the Right. Eclipse installed on that. Am I Yes, right on now? platform as service, exactly. But Okay. infra, you have to install Eclipse by yourself, and you have to deploy your application, and you have to test your application also. But here, testing and all these things will be managed by the vendor part. You will get everything onto the VM. Okay. I was what I was connecting previously, like in a platform as service, cloud is only providing the Eclipse. So I was like No. confused that means how it will be provided Yeah, at obviously, कुछ तो होना in a चाहिए form ना. of low. Yeah, Right. like how, yeah, like any something, VM yeah. So like capable. so okay, so they will provide us the VM Hmm. where the Eclipse would be हिमांशु, installed with a हिमांशु, license. Yeah, yeah, हेलो. yeah, please. Yeah, अगर please. अगर और डीप में जाना है ना, तो आई थिंक 8900 का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें उन्होंने प्रॉपरली दिया है कि हम कौन से सर्विसेज यूज कर सकते हैं और कौन से सर्विसेज यूज यूज एज्योर करेगा, मींस प्रोवाइड करेगा. तो उसमें हाँ. प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन है. 8900 का अगर डॉक्यूमेंटेशन Don't ओपन कर worry, लेना one आप. by don't worry. This is just हाँ. the introduction session. One by one, we'll discuss about everything, right? So need not to worry about all this part. Okay, I'm Okay, just I'm okay, just trying to make your base. That's it. आपको बस ये पता होना चाहिए IS क्या है, PAS क्या है, SAS क्या है. बस अभी तक मैं okay. अभी के लिए बस आपको ये भी पता हो कि it is a software as a service. It is okay for me, right? Yeah, Later on, fine. I will explain everything. Okay, Right, we'll right. go step by step. Okay, so these are the some cloud providers. Okay, now the life cycle of cloud computing solution. Let's suppose if you want to opt to cloud, right? So there are some of the steps that you need to follow before creating any of the infra on your cloud. ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमें करना क्या है, राइट? अब ऐसे ही थोड़ा ना मैं वहां जाके वर्चुअल मशीन बना दूंगा एंड वहां पे इंस्टॉलेशन अपना शुरू कर दूंगा, क्योंकि पे एज यू गो, जो भी सर्विसेज मैं यूज कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली द वेंडर विल गोइंग टू बी चार्ज. ठीक है, तो देर आर सम life cycle that we need to follow. So first of all, define the purpose. क्या चाहिए मुझे? अब देखो, पर्पस आप यहीं पे डिफाइन आपका इधर ही हो जाएगा. ये देखो क्या लिखा हुआ है, वेदर यू वांट योर क्लाउड टू बी पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहां से सिलेक्ट कर लो. उसके बाद में SaaS PaaS IaaS क्या सिलेक्ट करना है, यू विल डिसाइड. यू विल मेक योर लाइक आप अपना प्रॉपर
एजेंडा क्रिएट करोगे दैट आपको जो भी क्रिएट करना है उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी. Yeah, please mute yourself if you do not have any query. Okay, okay. So first of all, we'll define the purpose. That the first and foremost step is to define the purpose for which you want to create a cloud. Okay. For this, you have the first to understand your business requirement and what type of application you want to run on the cloud. And after this, you have to decide whether you want your cloud to be public, private, or hybrid. Right? And then you will decide the hardware. Means, let's suppose you want to run any file server, or if you want to run any domain controller. So for that, there should be some computation power needed. Right? So then you will decide the hardware, that आपका hardware SSD कितना होना चाहिए, वो तो चलो आगे का पार्ट आएगा. So first of all we'll decide what type of hardware you will be need. क्योंकि देखो अगर आप Azure पे जाते हो, see, let me show you. Give me a moment. Yeah, so there are some virtual machine series, right? So entry level VMs, BS series. This series you also should be aware of, because sometime interviews में they can ask that कि इस series किस लिए काम आता है, BS series किस लिए काम आता है, right? So according you should aware of that what are the types of series and why they are being used. Okay. Then there are D series, E series. So according to your need, you can just select. How many series, sir? Total. There are multiple series, right? Multiple series. Okay. Right. So according to your need, you can decide. Right? तो जितना मतलब obviously अभी देखो 657 per month dollar. It is asking for $657. So ये थोड़ा और ये powerful है VMs यहाँ पे. Right? So you have to decide कि आपकी एप्लीकेशन के लिए या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको किस टाइप का हार्डवेयर चाहिए. Okay, and even at the time of creation of any of the resource, you will get the types of series, right? And according to your requirement, you can just select your series and you can build your virtual machine. ठीक है, ये देखो MV2 series है. This is largest memory optimized virtual machine and on a single VM and offer 3 TB, 6 TB and 12 TB memory configurations. Right? So you can just go through with it. I am just going to, or even you can Google it. That what are the types of virtual machines available under Azure. Even for AWS also you will get the series also, these kind of series. ठीक है, AWS में भी same आपको अपनी series define करनी पड़ती है and then you will be able to build your infra. Okay, now एक बार specify हो गया कि हाँ आपको इतना करना है, then you have to select the storage. अब स्टोरेज टाइप भी देखा आपको कि किस टाइप की स्टोरेज आप SSD यूज करना चाहते हो और नॉर्मल HDD यूज करना चाहते हो. Right? Or even you want to make sure that your storage, जैसे SAN का एग्जांपल ले लो, SANs या फिर NAS का एग्जांपल ले लो. SAN और NAS क्या है, जो ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं, राइट? तो these storage devices can be accessed through like outside your network also. Through internet you can access your SAN or NAS. Right? Same in case of cloud also, if you want to make sure that your storage should be available. जैसे आप Google Drive यूज करते हो, आपको Google Yes, Drive sir. में 15 GB स्पेस मिल जाता है. Yes, yes. राइट? तो आपके ऊपर आपके पास तो पूरा कंट्रोल नहीं है उसका, या आपको तो नहीं पता नहीं, वो sir. एक्चुअली कहाँ पे स्टोर हो रहा है. No, sir. Right? So at the same time you can define that what actually, whether you want to make it within your infra or outside your infra, you can decide accordingly. Right? Then define the network. अब obviously आपने virtual machine बना ली तो आपको उसकी networking भी setup करना है.
that let's suppose आपने कोई website host कराई है, so you have to make sure that that website should be highly available to your customers, है ना. अब आप customers को ये तो नहीं बोल सकते कि यार मेरी website down है. ये हो सकता है चलो आपने maintenance के लिए डाल दिया, that there is some maintenance going on, but we have to make sure that our website should be highly available, 24/7 available to our clients, right? So we should make the network like that only, right? And then we will be needing security as well. अब internet पे सब कुछ run हो रहा है, so according to that we have to set up some firewall rules, or we have to set up some firewalls also. देखो cloud पे you will get the everything, switches, routers, your firewalls, everything you will get it. मतलब जो ट्रेडिशनली आपके पहले ऑन प्रेम डेटा सेंटर पे होता था, लेट मी गिव यू एग्जांपल, ठीक है. सो लेट्स सपोज दिस वन इज योर डेटा सेंटर रैक, लगा लो आपका ये सर्वर रैक है, राइट? अब Yes, इस sir. सर्वर रैक में आपने क्या किया, एक सर्वर यहाँ पे सेटअप किया, एक यहाँ पे किया, or we can make it like this, just a sec. Let's suppose this one is server 1, this one is server 2, server 3, server 4. Right? So you have to make the connectivity of all these servers if you want to make. अगर isolate रखना है, you can do that. But if you want to, if you want that communication should be there, so in that case you have to set up some IP configuration, and you have to uh, set up a switch. So this switch will be connected to, let's suppose this one is, so these are the ports of switch which are connected to your servers, right? And then you used to set up a firewall also, so that आप अपने ट्रैफिक कंट्रोल कर सको कि कौन सा ट्रैफिक आपका अंदर जा सकता है और कौन सा ट्रैफिक बाहर आ सकता है. यू कैन डिसाइड, अगर लेट्स सपोज यू वांट टू ब्लॉक any of the website for these particular servers or for other clients also, right? तो आप उसको कहाँ ब्लॉक कर सकते हो, अपनी फायरवॉल पे ब्लॉक कर सकते हो. सो जो आपका ट्रैफिक है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे बैठ के facebook.com टाइप करता हूँ, राइट, एंड दिस विल बी द इंटरनेट, तो ये जो मेरा फायरवॉल होगा, इसका एक पोर्ट होगा इंटरनेट से कनेक्टेड, जो डायरेक्टली आईएसपी से आ रहा होगा, ठीक है. एंड इसका एक पोर्ट होगा मेरा स्विच से कनेक्टेड, जहां पे मैं Switch से connected. से कनेक्टेड, ठीक है. तो लेट्स सपोज मैंने क्या किया, आई वांट टू ब्लॉक एनी ट्रैफिक. लेट्स सपोज मैं facebook.com ब्लॉक करना चाहता हूँ, ठीक है. तो facebook.com की रिक्वेस्ट आई मेरे स्विच तक, स्विच से आई मेरी फायरवॉल तक, क्योंकि Firewall ऑब्वियसली तक. इंटरनेट चाहिए, फायरवॉल मेरा राउट करेगी ट्रैफिक, राइट. बट अगर मैं इसको यहाँ पे ही ब्लॉक कर देता हूँ, so this Facebook will be blocked for whole my network, वो इंटरनेट तक उसकी रिक्वेस्ट जाएगी ही नहीं. So same way I can set up all these things on my cloud as well. As per my rule only, my network is going to be work. ठीक है. So that is the part of your security. Okay. Yes. Okay, so this is a part of your security. The security is a key aspect of any application. Set up your security service which enables services for user authentication or limiting the access to a certain set of users on your resources. तो यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हो, सिक्योरिटी. अब देखो क्लाउड है, राइट. अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट बनाया है AWS पे, राइट. एक एडमिन अकाउंट जो सुपर एडमिन अकाउंट है, मींस उस सुपर एडमिन के पास पूरा पावर है उस AWS कंसोल का या फिर Azure कंसोल का, राइट. बट एट द सेम टाइम आई कैन प्रोवाइड सम डेलीगेट राइट्स आल्सो. डेलीगेशन का टॉपिक किया था हमने MCSA में, इफ एनीबडी कैन रिलेट, इमाद और
Maybe you can relate him, right? You were I in the will previous relate. project. Delegation is something like we are giving the same rights to someone else, right? Not the same right, the customized rights. Okay. कि मैं चाहता हूं कि मेरा एक यूजर वहां पे यूजर डीसी पे यूजर क्रिएट कर पाए एंड उसके अलावा वो कुछ ना कर पाए, Okay. राइट? सो आई कैन डेलीगेट द राइट्स. सो ऑन द क्लाउड आल्सो आई कैन डिफाइन कि कौन सा यूजर वर्चुअल मशीन बना सकता है, कौन सा यूजर एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन में चेंजेस कर सकता है. सो एवरीथिंग आई कैन डिसाइड, एवरीथिंग आई कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू माय नीड. ठीक है. Azure में अब हर एक यूजर को मैं अपना एडमिन राइट तो नहीं दूंगा, नो सर. राइट? क्योंकि कुछ भी मेरे इंफ्रा में चेंजेस कर दे, वो डिलीट कर दे कोई वर्चुअल मशीन. एंड हाँ, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है किसी यूजर का, सो अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन डिफाइन हिम और आई कैन गिव हिम द एडमिन राइट्स. सर आई हैव वन क्वेश्चन. हाँ जी. जैसे कि सर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जैसे अभी सारे सिस्टम वर्क ग्रुप में है पीसी, हाँ जी. तो अभी हमें फिर क्लाउड की, अगर हम क्लाउड पे देते हैं तो हमें सर्वर्स और फायरवॉल्स वगैरह की डोमेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसमें नीड. किसमें दोबारा बोलो. जैसे हम और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, नई कोई कंपनी क्रिएट हुई है, ठीक है. अभी उसमें सपोज कीजिए 20 कंप्यूटर्स हैं उसमें लगे हुए हैं. ठीक है. ठीक है. तो हम्म. उसमें सर्वर्स की, और हमें वो क्लाउड पे करना है पूरा सारा काम जो भी है, ठीक है. तो उसमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए फायरवॉल हम्म. और डोमेन कंट्रोलर की जरूरत होगी या नहीं होगी सर, या सारे सिस्टम वर्क ग्रुप में रहेंगे? क्यों? डीसी हम बनाएंगे, अब बनाएंगे हम, डोमेन में ज्वाइन कराएंगे सिस्टम्स को. डोमेन और ज्वाइन जो होंगी भी ना सर? जो भी हम अपनी पॉलिसीज बनाएंगे वो भी इम्प्लीमेंट होगी, सब कुछ बिना होगा. डो अच्छा, बिना और डीसी सारा के डाटा जो बिना तो स्टोरेज नहीं वगैरह का वो फायदा. क्लाउड पर रहेगा. क्लाउड तो सर किस तरीके से कॉन्फ़िगर होगा उस पर, मतलब डोमेन कंट्रोलर पे ही रहेगा ना सारा कुछ राइट्स? डोमेन कंट्रोलर किस लिए यूज होता है? हाँ, कंट्रोल करने के लिए ही ना. डोमेन को कंट्रोल करने ऑथेंटिकेशन के लिए, और इफ यू वांट टू क्रिएट एनी यूजर्स और इफ यू वांट टू जॉइन न्यू एनी यूजर ऑफ द क्रिएट सिस्टम करने इन के योर लिए. डोमेन, राइट? तो सेंट्रलाइज सर मैनेजमेंट के लिए। करने के लिए। हाँ हाँ, यस. आप हाँ, तो तो उसका फाइल क्लाउड सर्वर का से क्या मतलब हुआ? नहीं सर, मैं इसकी बोल रहा हूँ, क्लाउड के लिए उस पे डोमेन कंट्रोलर पे जो हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट्स देंगे ना उसको सबको अलग अलग. हाँ, डीसी पे डेलीगेट राइट्स देंगे. जिसे आप बता रहे हो ना भी, जिसमें एक एडमिन राइट्स दे देंगे, जिसमें कोई यूजर न्यू क्रिएट करना है या क्या उसको राइट्स देने हैं. यहाँ पे दो चीजें हैं, दो चीज समझो यहाँ पे. ठीक ठीक है. है. सबसे पहले तो एज्योर कंसोल के राइट्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी के लिए, मैं डीसी के राइट्स की ठीक है. बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक ठीक है. है. एज्योर हम्म. कंसोल देखो, मैं अभी लॉगिन करके दिखाता हूँ, लेट मी शो यू. मे बी मेरा अभी अकाउंट कोई, एक सेकेंड, एक सेकेंड दो मुझे. श्योर श्योर. सर अभी ये कोर्स में आप माइग्रेशन प्रोसेस भी बताओगे कि क्या वो जो ऑन यस यस, आई प्रेमाइसेस पूरा पूरा जो डोमेन कंट्रोलर है सब ऑन विल. श्योर, प्रेमाइसेस पे है सर, मैं बताऊंगा, उसको हम लोग एज्योर क्लाउड पे एडी, कैसे एज्योर एडी कंप्लीटली कनेक्ट बोलते हैं उसको. अगर आपको अपनी एडी मूव करनी है एज्योर पे, सो देयर इज अ टूल कॉल्ड एज्योर कनेक्ट. So you have to set up in your DC, and then it will start replicating your users and computers on your cloud, Azure cloud. ठीक है. मुझे जितना भी मेरे अच्छा, कंपनी में एज्योर जितना एडी भी का अलग रहेगा अलग उसमें कंट्रोल. एग्जैक्टली. वो आप फिर Azure AD आप यहीं से, मतलब यहाँ से मैनेज कर लोगे फिर. तो ठीक है. मेरा एक फिर ठीक क्वेश्चन है है सर, अब समझ फिर में आप आ रहा है. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA एंड ऑल, फिर आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो उसको. ओके, सी, सो दिस इज द कंसोल ऑफ योर Azure. ठीक है. अभी के लिए आई एम द एडमिन, right? And I can do anything. I can create a resource, I can create virtual machine, I can create Windows Server data center, मतलब जो भी मेरी requirement I can do that, ओके. right? अब at the same time I can provide multiple accesses to the users. अब देखो, क्योंकि क्या हो सकता है, आपकी आईटी टीम में इट कैन पॉसिबल कि 20 से 25 एम्प्लॉयज हो, आईटी मेंबर्स, टीम मेंबर हो. ठीक है. तो उनके पास भी तो कुछ लॉगिन एक्सेस होना चाहिए, वो भी तो कुछ करेंगे, आपने उनको हायर किया, कुछ तो करवाओगे उनसे भी, राइट? यस सर. अब
मैं करवाऊंगा तो जरूर, बट मैं उनको कस्टमाइज राइट्स दूंगा। मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कि तू क्रिएट कर ले, मैं उनको कुछ मॉनिटरिंग के राइट्स दे दूंगा कि तू मॉनिटर कर ले मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। एडमिन के राइट्स नहीं रहेंगे, ये क्लिक एडमिन करेंगे। के राइट्स दे दूंगा, मैं उनको कस्टमाइज राइट्स दूंगा। तो ये बात होगी हम्म। एज्योर कंसोल की। उसके बाद आती एजोर है कंसोल टीसी पे। की बात कर रहे हो आप, जो डोमेन कंट्रोलर्स पे राइट्स देते हैं, वो दूसरी बात आ गई। ठीक है। ठीक है, तो ये दो चीज अलग अलग है, कंफ्यूज मत हो इन दोनों चीजों में। तो सर ये कहना चाहिए कि अज्योर एडी जो होगा वो बीच में इंटरफेस करेगा। डोमेन कंट्रोलर पे हम एज्योर एडी को ही तो कॉन्फ़िगर करेंगे। एज्योर एक डोमेन कंट्रोलर पे आप डोमेन कॉन्फ़िगर करोगे अपनी, ठीक है। अगर आपके पास ऑन प्रेम कोई डोमेन कंट्रोलर है, आप उसको माइग्रेट करना चाहते हो एज्योर एडी पे, तो आपको एक टूल यूज करना होगा, दैट इज एज्योर एडी कनेक्ट। वो क्या हाँ। करेगा, वो आपका, एक सेकेंड मैं पेंट पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सी, लेट्स सपोज दिस वन इज योर डोमेन कंट्रोलर, ओके। ठीक है, और दिस वन इज योर क्लाउड एज्योर एडी जहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है, आपकी डोमेन। ठीक है। देन ठीक है। आप ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, आप अपने इस डीसी में एक टूल इंस्टॉल करोगे एज्योर एडी कनेक्ट। अज्योर एडी कनेक्ट। और भी टूल्स आते हैं, सो मेजरली हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। एज्योर एडी कनेक्ट यूज करोगे, और फिर उसको बाद आप अपने सारे क्लाउड का एक्सेस दोगे, बताओगे कि कहाँ पर आपका कॉन्फ़िगर्ड है, क्या आईपी है रिसोर्स की, मतलब कहाँ भी आप कहाँ चाहते हो आप, ठीक है। उसके बाद वंस इट विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद योर क्लाउड, इट विल स्टार्ट रेप्लिकेटिंग वट एवर द रिसोर्सेज यू हैव अंडर योर ऑन प्रीम एडी आर गोइंग टू बी रेप्लिकेट ऑन योर क्लाउड। यहाँ पे सारे यूजर्स कंप्यूटर्स जो भी आपके पड़े होंगे, दैट आर स्टार्ट रेप्लिकेटिंग टू योर एज्योर एडी। जैसे ऑफिस ठीक है। 365 में होता है सेम ऐसे। क्लियर है अब? ठीक है सर, हाँ क्लियर। तो चलो, सर ये सिंक ऑटोमेटिकली करना मतलब करना होता है या ऑटोमेटिकली होता है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सेटअप करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद में ऑटो सिंक होता रहेगा। ओके, You have to इट्स make नॉट sure लाइक the दैट communication should be there. You have to make sure the communication, Devanshu. Let's if the communication if it disconnect, then obviously it will not be able to replicate, right? So you have to make sure highly available. Your network should be highly available. तो प्रॉपर इसीलिए सिंक हम लोग करनी क्या होगी। करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करते हैं, एनआईसी टीमिंग कॉन्फ़िगर करके रखते हैं, सो दैट अगर हमारा कोई एक एनआईसी कार्ड फेल भी हो जाता है, सो सेकंड एनआईसी के थ्रू हमारी ट्रैफिक जो है वो ट्रैवल कर जाए, ठीक है। I have a question. यस यस प्लीज। सपोज कि अभी जो कंपनी यूज कर रही थी, नई कंपनी थी, वो सर्वर यूज कर रही थी, बट एट सडन कोविड की सिचुएशन आई एंड दे हाँ वांट जी। टू माइग्रेट ऑल द डेटा टू द अज्योर हम्म। चीज। इवन दो फायरवॉल जितने भी सारी चीजें, सारी इक्विपमेंट, कोविड की सिचुएशन आई और एट सडन उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल डिसाइड टू मूव ऑन अज्योर। एग्जैक्टली। एक एग्जांपल और दूं? तो हाँ, आप यू कैरी ऑन प्लीज, सॉरी। हाँ सर, आप बता सकते। ओके। सो आप कोविड का एग्जांपल ले रहे थे, सो आप ये आरोग्य सेतु एंड ऑल दीज एप्स, ठीक है, ये सारा सेटअप ऐसे ऐसे। एकदम कैसे क्रिएट हो गया? अगर आप ऑन प्रीम ये लेके चलते तो क्या आप ये सब कर पाते? मतलब आप देख सकते हो हमारी पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, राइट? सो द होल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये आरोग्य सेतु ऐप थे या फिर जो भी ट्रैक हो रहे थे पेशेंट्स, राइट, सो एवरीथिंग इज ऑन क्लाउड। हाँ, वहां पर एडब्ल्यूएस यूज हुआ था, बट एज्योर नहीं हुआ, बट दे वर यूजिंग एडब्ल्यूएस, एंड रातों रात उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, एंड दे वर एबल टू ट्रैक ऑल द पेशेंट, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ योर क्लाउड। बट अगर मैं यही बात करता, ऑन प्रीम डेटा सेंटर लेट्स सपोज मैं सेटअप कर लेता, ठीक है, तो ऑन प्रीम सर्वर्स में जो खरीदता उसकी तो एक लिमिट है ना, कि मैं 256 GB रैम का मैंने सर्वर खरीद लिया, या फिर 512 GB रैम का सर्वर खरीद लिया, वो लिमिटेशन है। बट जैसे ही उस पर ट्रैफिक बढ़ेगा, ऑब्वियसली उसकी भी एक कंप्यूटेशन पावर है, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली इट कैन हाँ रिस्पॉन्ड, है ना। बट दूसरी यही ओर। मैंने क्लाउड पे इसीलिए किया क्योंकि देर इज इलास्टिसिटी, that according to the load it will increase its computation power. So that is why they configured the infrastructure on AWS.
Okay. Okay, so this is the power of cloud. Basically, I am trying to explain the power of cloud. ठीक है? Okay, so define, so fifth one is define the security, right? And then sixth one, define the management process and tools. Tools in the sense, Getting some the develop, voice from Nakat Singh. Who is guys, talking? please mute yourself. Please mute yourself if it is needed. If it is not needed, yeah. Okay, then define the management process and tools. The developer should have complete control over the resource and and to configure these, you should define some management tools with which monitor your cloud environment. तो यहाँ पर अब क्या आएगा, आप कुछ monitoring tools भी लेकर आओगे, right? Monitoring tool in the sense, एग्जाम्पल के लिए आप ये ले सकते हो कि कौन सा वर्चुअल मशीन एक्चुअली आपका काम कर रहा है, कौन सा नहीं काम कर रहा, राइट? यू कैन मॉनिटर योर ट्रैफिक ऑफ योर वेबसाइट ऑल्सो, कि कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक लाइक हिट कर रहे हैं, कितने नहीं, मतलब क्या पूरे डे का डेटा। जैसे यूट्यूब पे आपको, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ यूट्यूब, ठीक है? यूट्यूब पे आपको सब दिखता है कितने व्यूज हैं, राइट? यस और सर। किसी का अगर चैनल है तो उसको सब मोनेटाइजेशन एंड ऑल, कि एक दिन में कितने व्यूज आए, एवरीथिंग यू कैन ट्रैक ऑन यूट्यूब, right? So same thing you can also set up as per the infrastructure. You can set up your monitoring tools also under the management process and tools. And management process can be also like providing the accesses to the users, ठीक है? And last one is testing and process. Means this, everything is done, everything is planned. Now you can just test your application, or you can just test your requirement whether it is running as per your need or not. And if it is running, then you can process and you can make it in your production environment, right? Okay. So this is the basic of cloud computing. इसके अलावा cloud computing कुछ नहीं है, right? अगर आपको ये सब concepts clear है, right, then you यस will be able to use the console. और कंसोल कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वो चलाना सीखना है, आपको वो सर्विसेज का पता होना चाहिए, कौन सी सर्विस किस लिए काम आ रही है, राइट? अगर आपको वो पता है, सो यू कैन ऑप्ट क्लाउड इजीली, राइट? और जो ऑलरेडी जिन्होंने एमसीएसए किया है, जिनको ऑलरेडी सर्वर्स के बारे में पता है, उनके लिए बहुत इजी रहने वाला है, right? Because some of the things we are going to use of our MCSA batch also. But maybe if you are not aware of MCSA and servers, I would recommend to just learn about servers first of all, and then you can opt to the cloud, and then you can go for the Azure. So this is the base, right? So if our servers base is clear, if we knows about the functioning of our servers, then it is very much easy for us to learn Azure. सर एक क्वेश्चन है। Yes, now we are open for queries. You can ask anything if you want to. सर एक क्वेश्चन है। Yeah. I'm audible? Yeah, you are. सर पंकज ने जैसा क्वेश्चन किया था, एक कि सपोज दैट हम वी आर स्टार्टिंग अ न्यू कंपनी एंड कि मैं अपने ऑन प्रीम में कुछ चाहता ही नहीं हूँ कि कुछ भी मैं सेटअप करूँ, तो फर्स्ट मेरे ठीक को है, क्या क्या कंपोनेंट की नीड होगी? आपको पहले वही मैंने जो ये 6th 7th फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये सातों फेज देखने पड़ेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? वंस यू आर, लेट्स सपोज आपको एक डीसी बनाना है, डोमेन कंट्रोलर की बात कर लो चलो अभी के लिए, ठीक है? अभी हम कोई एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे, कुछ भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम डीसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इफ आई आस्क, अगर एक डीसी आपको बनाना है, एक डीसी को बनाने के लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? को बनाने की एक रिक्वायरमेंट सर्वर चाहिए सर हमें। सर्वर शुड हैव हाई अवेलेबिलिटी, हाई गुड सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड ऑल। हाई परफॉर्मेंस, हाई प्रोसेसर ओके, Correct. एंड डोमेन नेम हार्डवेयर नहीं चाहिए? एक क्या आईपी सर? एड्रेस भी चाहिए सर। डोमेन नेम नहीं चाहिए? Yeah, हाँ, correct. हाँ, चाहिए। डोमेन नेम एग्जैक्टली। Okay, see, so whenever you have to build a domain controller, so आप यहीं से requirement लगाओ, आपकी requirement क्या है? First of all, आपको एक virtual machine चाहिए. You can select server 16, you can select server 19, ठीक है? यस यस सर।
उसके बाद में आप अपनी प्रोसेसर डिफाइन करो, उसमें एवरीथिंग यू विल गेट अंडर like while you will create the resource, you will get that which processor you want to use, everything like you have to decide. ठीक है, so after creating that virtual machine, you have to set up networking also. You have to give the IP configuration to that particular virtual machine. ठीक है, and then after building up the virtual machine, you have to install ADDS and DNS services onto that virtual machine. Yes, Right? yes. After that, you have to promote that server to a domain controller, where you are going to create forest first of all. If you are creating any primary domain controller, then in that case you have to create forest first of all. ठीक है, so under that forest you will provide your domain name. Let's suppose it is lab.com. ठीक है, after providing lab.com, you will be able to make that server as a primary domain controller, and then your clients should have the IP address of that PDC so that they will be able to join the domain. So this is the whole process we need to take care if you have to set up a primary domain controller. Same in case of websites. आप अपनी वेबसाइट होस्ट करोगे, IIS सर्विस कॉन्फ़िगर करोगे उसके अंदर सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डेटाबेस भी आपको उससे कनेक्ट कराना है तो आप उसमें डेटाबेस भी कॉन्फ़िगर करोगे, ओके। एंड देन आप उस अपनी वेबसाइट की क्लस्टरिंग भी फेल ओवर क्लस्टरिंग अगर करना चाहते हो, मींस कि अगर आपका एक सर्वर फेल हो जाता है रिस्पॉन्ड करने में, तो सेकंड सर्वर ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसिंग को बोल सकते हो आप इसको, कि आपका सेकंड सर्वर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे. So you can configure the load balancing also. फॉल्ट टॉलरेंस हो गया ना. Fault tolerance, yes, but load balancing is the correct word for that. सर ठीक एक है, क्वेश्चन था कि आईएएस जो है वो एमसीएसए का पार्ट है वैसे कि मतलब मेरे को पता आईएएस क्या है yes, बट बिल्कुल कंफर्म बिल्कुल. करना जो आपने अभी तक MCS से किया है ना, that is IAS. ओके ठीक है. सर जैसे हमारा पूरा डोमेन सेटअप हो गया क्लाउड में, करेक्ट? हाँ जी. तो मैंने उसमें यूजर क्रिएट कर लिए. अब सपोज मेरे को मैंने एक अपने मतलब कोई मशीन ली, उसमें मेरे को कनेक्ट करना है उस डोमेन के साथ. ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट मेरे को चाहिए होंगे? आप अपने ऑफिस का नेटवर्क को कनेक्ट करवाओगे आपके क्लाउड के नेटवर्क से, राउट करवाओगे फायरवॉल के थ्रू सर. फायरवॉल के थ्रू, या फिर जो भी आप MPLS whatever but you are going to use. I'm not the network guy. ठीक है, so Okay. first of all you have to set up the connectivity, right? And हाँ, अगर आपको जैसे ही आपको पिंग आना शुरू हो गया आपके क्लाइंट्स पे, so they will be able to authenticate. तो राइट सर साइड क्लाउड तो साइड पब्लिक आईपी यूज करता है ना, स्टैटिक आईपी जो मतलब So पब्लिक you आईपी होता है जो. हाँ, तो आप पब्लिक के साथ अपना स्टैटिक वो भी डाल सकते हो ना, डायनामिक भी डाल, सॉरी, आप अपना स्टैटिक आईपी वहाँ पे डाल सकते हो अपना प्राइवेट सीरीज का. और else then Okay. routing and अगर traffic आपको can प्राइवेट सीरीज से कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको बीच में कोई सेटअप, गेटवे सेटअप करना पड़ेगा, है ना. we कि can set up अगर आप पब्लिकली उसको कनेक्ट नहीं करना चाहते, so in that case you have to set up the bastion or any of the gateway so that you will be able to connect through your private IP address also. I will show you during Okay our sir. demo how to do that. Hi sir, Sandeep here. Hi Sandeep. Sorry, I joined little late. Mhm. Just I have one question. This like in AWS for network engineers, will use like VPC and Yes. for sharing the subnet and selecting the IP address, Hmm. like that will use in AWS. How Right. about in Azure? How it will use for network engineers? सो नेटवर्क इंजीनियर सी, अगर मुझे अब सिक्योरिटी अपना सेटअप करना है, राइट, मुझे अपना कम्युनिकेशन सेटअप करना है, Sorry, I ऑब्वियसली don't आई know विल बी Hindi. नीडिंग. Can you Okay, please okay, speak okay, okay, English? okay, okay. See, if I need to set up the network connectivity or if I need to make my infrastructure secure, I will be needing the network engineer, right? So here also we have we have option to share the IP address and subnet details like that. It is there in Azure, Yes, we do have. Yes, we can do that. So and everything, whatever available in your AWS, we can do it in Azure. But yes, there are some limitation in Azure, right? before few minutes you told us to take care of some like server knowledge, like how Yeah, server server knowledge, knowledge right? in the sense. Server knowledge in the sense you should be aware of working on on-prem data centers.
Okay. You should aware of the features of server, that how to manage the features of that are available on your servers. So that was Great. I was explaining. Thank you, sir. Yeah. So hope I am clear to everyone. Yes or no? Yes, sir. Clear, sir. Yeah, सही ग्रुप बना सकते हैं क्या इस बेस का? Sorry. Can we make one WhatsApp group for this batch? So For this we have uh, to talk to the networking team and then we can decide it. Okay. First of all, let's Okay, start okay. and then we'll decide whatever the things will be needed. Yes, I am going to create a classroom. Like earlier also I used to do it for MCS batch, and the same I'm going to use it for Azure also. Okay, where whatever the study material is there, and yeah, mute karo, please mute yourself. So, what is the duration of this course, Azure? How much it will take the time? It will take around 35 to 40 hours, 55 to 40 hours. right? Or Means you So, every can weekend 1 हमारी hour, class weekend रहेगी sir? every weekend it will be for 2 hours. 2 hours. Fine. Today only we do have the demo session, but like once we'll get into the pace, it will going to be for 2 hours a day, and it will be on weekend Sir, only. timing यही रहेगी sir, same 8 p.m. Right, 8 p.m. will be the timing. And guys, see, if you are not aware of servers, so I am also running a batch on like on weekdays. So if you're not aware about servers, so you can join my MCSA batch also. Okay. Moral class for Like Azure. hello. Yep. सर ये एमसीएस का बैच आपका कब से स्टार्ट हुआ है? We are going to start a new batch very soon, so you can just talk to the networking team. They will let you know. ओके, या श्योर Yeah, सर. yeah. या बट इसके लिए बेसिक एमसीएस से चाहिए सर्वर. Yes, you should have. You should have. एमसीएस या एमसीसी? MCSA. ये एमसीएस. वो तो बहुत अच्छी बात है, right? But MCSA is good. MCSA ओके will ओके, work. या Okay. श्योर सर. Nothing but Windows Server, correct? Exactly. Nothing but Windows Server only. Is it for सर 2016 or 19, पता है sir? आप like we are performing it on 2016 as well as on 2019 also in my batches, Okay, right? So it fine. totally depends on your need, how you want to work on. ठीक है. So see, मैं बोल रहा हूँ कि नॉलेज इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी मैं अगर लेट्स सपोज मैं एक डीसी सेटअप करता हूँ, राइट? तो मैं उसका डीसी का Yes. पूरा बैकग्राउंड तो समझाने नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई मस्ट बी मैं ये समझूंगा कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर है, Yes, right? sir. Yes. So that is why the MCSA knowledge is needed, right? नहीं तो अगर आप ऐसे ज्वाइन करोगे आप समझ जाओगे चीजें हैं, बट अगर आपको इन डेप्थ समझना है चीजें, व्हाट आर एफएसएमओ रोल्स, अगर आपको पीडीसी आप सेटअप करते हो, सो एट दैट टाइम एफएसएमओ रोल्स आर कॉन्फ़िगर्ड एंड दैट एफएसएमओ रोल्स यूज्ड टू मैनेज योर डोमेन कंट्रोलर. ठीक है, तो जब तक आपको वो एफएसएमओ रोल्स पता ही नहीं होंगे, सो हाउ यू विल बी एबल टू like answer to the interviewer, right? Because see, अगर आप Azure 104 के साथ जा रहे हो तो इंटरव्यूअर भी ये समझेगा कि आपको सर्वर्स बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है? एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली ही विल गोइंग टू आस्क फ्रॉम यू. So that is why I'm asking, you should aware of the servers. Okay. सर मैंने आपका मैं एक्चुअली एमसीएससी किया, आपके बैच ऑलरेडी ज्वाइन किया था, मतलब हाँ लास्ट. जी, हाँ जी. और तो अभी जो भी रेज्यूमे बनेगा नहीं, उसमें अगर एमसीएससी का प्रॉपर जितना भी आपने बताया है तो राइट, वो अगर उसमें रहेगा तो वो बेनिफिशियल रहेगा ना फॉर द बिल्कुल, कोर्स ऑफ ऑब्वियसली, द. ऑब्वियसली, बिल्कुल रहेगा, और वो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए बिल्कुल, ना एक्चुअली. एग्जैक्टली. आप Azure 104 की naukri.com पे कोई भी प्रोफाइल देख लो, right? So they will be asking about all these things, domain controllers and your FSMO and whatever the DACPs, what are the services we have configured. Definitely they will going to ask. Okay, so obviously it will going to be beneficial for you. सर कल भी क्लास होगी ना 8 to 10? Yes, we do have. Yes. And as in Azure, the account is created for 30 days only, free Right. account. So will we be able to perform all the lab within 30 days? अब आपको उसके लिए दो क्रेडिट कार्ड अरेंज करने पड़ेंगे. अच्छा, 2 क्रेडिट कार्ड मतलब Right. पहले से एक अकाउंट, दूसरे से दूसरा अकाउंट. Exactly. सर वो स्टूडेंट के आईडी से भी तो हो जाता है ना, आई थिंक, मतलब हाँ, मैं भी कॉलेज की जो स्टूडेंट आईडी आईडी. यूज कर रहा हूँ, मैं भी यूज, क्योंकि मैं आई हैव ऑलरेडी यूज्ड ऑल माय क्रेडिट कार्ड्स, सो इवन आई एम यूजिंग द स्टूडेंट आईडी. आई थिंक ठीक उसके है, लिए 1 ईयर का मिलता है.
नहीं, टेस्टिंग के उसमें लिए? भी आपको $100 मिलेंगे एंड दैट विल बी फॉर ओके 1 month only. So if can we know that how much years of experience do you have in cloud? I have around 2.5 years in cloud, and then I have around 6.5 years of experience in IT, right? Earlier I Okay. was working on on-prem, and now I'm working on cloud. Okay, okay. Sir, you are working in which company now? We'll let you know later on. Okay, okay. Okay. You can scroll my LinkedIn profile, okay? Sure, sure, Chalo. sure. ठीक है सर. Chalo. Okay, guys. Bye. Good Okay. ओके night. सर, Take बाय, care. गुड See you Thank you, नाइट. sir. tomorrow. Bye bye. Thank you, Okay. sir. Bye bye. Good night. बाय. Thank you. Fine, sir. Good Thank you. night, sir. Right, Bye. sir. Good night. सर वन क्वेश्चन, कल बैच होगा कि कल हाँ ऑफ जी, है? कल बिल्कुल होगा. हाँ 8 to 10 है. हाँ जी, ठीक है. चलो. Sir, or thank you. Bye bye. Bye.